ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट क्लास मिड पॉइंट रेक्टिफायर को डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर जैसे मैंने पहले बताया, अ, ये भी इसकी एफिशिएंसी भी इक्वल टू मिड पॉइंट कन्वर्टर होती है, मिड पॉइंट रेक्टिफायर होती है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 4 डायोड यूज होते हैं, मिड पॉइंट में 2 डायोड यूज होते हैं। बट इसमें जो डायोड होंगे उनकी कॉस्ट कम होगी, बिकॉज उनके पीक इनवर्स वोल्टेज कम हो रहे हैं। चलिए इन चीज़ों को देखते हैं। सो ये मेरा बेसिकली सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव अ डायोड D1, D2, D3 एंड D4। नेमिंग कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बस नेम को सीक्वेंस में रखने के लिए इस तरीके से दिया हुआ है, D1, D2, D3 एंड D4। और दिस इज अ सिंगल फेज AC सर्किट। आउटपुट मुझे क्या चाहिए, DC चाहिए। सो इस केस में देखिए, जस्ट लाइक when let me animate, then explain it. Okay, now what happened, now when it is in the interval 0 to pi, it is plus and it is minus. Okay, in the interval 0 to pi. So in this duration, which two diodes are capable of conducting? Since the number D1 and D2 are capable of conducting, D1 will be basically called as a incoming diode and D2 will be called as a outgoing diode. Means current is entering in the load from the AC source to diode D1, and current is exiting the load from load to the source to diode D2. Okay, so D1 and will be called as an incoming diode and D2 will be called as an outgoing diode. Similarly, D3 will be called as an incoming diode and D4 will be called as an outgoing diode in the second and the first negative cycle, that is in the interval pi to 5. Okay, so in that interval, T1 is capable of conducting, so the current will flow in this direction. Sorry. The current will flow in this direction, in this direction, like this. So current will flow in this direction through D1 and D2 and complete the circuit. So in the interval 0 to pi, D1 and D2 will conduct. And again, as I have already stated that during the first waveform, current will start increasing from 0 to a particular saturated value, and then it will maintain the saturated value after that. ठीक है, पहले जब तक इंडक्टर सैचुरेट नहीं होता है वो इंक्रीज करेगा 0 से, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और वो मेंटेन रहेगा सैचुरेटेड वैल्यू, क्योंकि लोड का नेचर ऐसा है और हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा है। ठीक है, इसमें इसको आप ऑलरेडी पहले देखा था, इसको फिर से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, पर अगर ये आर लोड रहेगा तो डेफिनेटली ये वेवफॉर्म B0 के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, so what is the TRR, reverse recovery time of a diode? All the diodes are same, identical. So all the diodes TRR, reverse recovery time, will be same. So it will be 2 pi minus pi divided by omega. Now what happened during the interval 0 to pi, D1 and D2 will be conducting and current will start from 0 to a particular saturated value, and then after that it will maintain that saturated value. D2 and D1 and D2 will be on, so its voltage across them will be 0. The voltage across between D3 and D4 will be equal to supply voltage, that is Vs. Just look at it, this is on. Okay, तो V जब ऑन ए है तो यहाँ प्लस लग रहा है ना। देखिए ये प्लस यहाँ लगेगा ऑन होने की वजह से, और चूंकि ये माइनस है इधर, तो रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू Vs लग रहा है। तो हमने Vm पिक इनवर्स वोल्टेज बना दिया। उसी तरीके से इंटरवल पाई टू 2 पाई के बीच में देखिए क्या हो रहा है।
पाई से 2 पाई के बीच में 1 मिनट। Okay, so in that, now see here, now when it is in the interval pi to 2 पाई में, तो ये प्लस है and this is minus. So in this case D3 and D4 will conduct. So इधर प्लस मिलेगा और इधर माइनस मिलेगा डायोड D1 में। तो डायोड D1 में रिवर्स वोल्टेज इक्वल टू Vm लगेगा और आउटपुट वोल्टेज will be equal to supply voltage because in this case current will flow in this direction, same लोड में करंट की का डायरेक्शन सेम रहेगा। Okay, so that's why current will maintain its direction in this saturated value. Output voltage will be equal to supply voltage VT1 और VT2 से रिवर्स वोल्टेज Vm होगा। और चूंकि D3 D4 ऑन है तो उसके पास वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। सेम सेकेंड साइकिल में रिपीट होता जाएगा ये, जस्ट लाइक दिस। सो इधर इधर आप देख रहे हैं कि करंट जो आउटपुट करंट है इट इज मेंटेनिंग अ सैचुरेटेड वैल्यू, इट इज नॉट कमिंग डाउन और अप। ठीक है, व्हाट अबाउट द एवरेज वोल्टेज? तो एवरेज वोल्टेज सिमिलरली हमने मिड पॉइंट में जैसे निकाला था, सेम तरीका है इसमें भी निकालने का। ठीक है, सेम चूंकि आउटपुट वोल्टेज सेम है तो जस्ट इसका वैल्यू भी सेम हमें मिलेगा, एवरेज वैल्यू भी सेम मिलेगा। पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें 2, इसमें Vm है, दैट्स व्हाई इट्स कॉस्ट इज विल बी लेस। RMS voltage same as Vm by 2 to 2, you can easily calculate this value. Okay, so that is all about the bridge rectifier. Bridge rectifier काफी extensively use होता है इंडस्ट्री में because of its compact size. Okay, but अगर डायोड का देखा जाए तो डायोड नंबर ऑफ डायोड्स में ज़्यादा होते हैं बट इनकी पीक इनवर्स वोल्टेज कम होती है। ठीक है, बाकी जो कंपैरिजन है परफॉर्मेंस, अभी दो कंपैरिजन आप लोगों को मैं बताया है, बाकी जो चीज़ है वो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग को बाकी जो पैरामीटर है उसको हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन का। थैंक यू।